on the raw material consumed. So it will be 30,000. Now the units produced class are 34,200. So which means that the initial calculations which we are making, for each cost, total cost, you divided by 34,200. So do one thing side by side. Per unit जो cost है आप मुझे बताते रहना. I'll keep noting it in the solution. So raw material की per unit cost will be 30,000 divided by 34,200. By that time, I will write the labor cost also. This will again be spread on 34,200 units. What is the per unit cost for material? Anyone who has calculated, please put it in the chat box. और एक बारी लेबर की भी पुट कर दो. 0.877 and for labor it is 0.526. Okay, so which means your prime cost is 48,000, and you can total it up. 1.303 is your prime cost. After that, we will add all the factory overheads. So machine cost will be the first. 1.403 आ रहा है. अच्छा हाँ, 1 एक और add हुआ. I'll just correct this. So machine hours worked is 1800 and into 5. Machine cost will be 9,000. After that, there's no other expense related to factory overheads. इसका per unit cost एक बारी chat box में put कर दो. Your works cost or factory cost will be 57,000. $1.666 will be your per unit works cost. If there is any problem till here, please ask. We are simply following the format of a cost sheet. Post calculation of works cost, we go for calculation of cost of production by adding the administrative and office expenses. So in the question, you are given that the administrative expense is 20% of the works cost. So 20% of 57,000 will be 11400. Yes. Okay, and similarly, you will also calculate 20% of the per unit cost, which will be 0.333.
3 करके या इसको 4 कर दो ताकि राउंड ऑफ हो जाएगा. So you will get your cost of production till here. You are given that units produced were 34,200 while the units sold are 32,000. So which means before we come to the final cost of production, we also need to reduce it by the closing stock. क्योंकि इस स्टेप में ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है. तो before we arrive at the final cost of production, we will less the closing stock here. If you want, इसको आप cost of production लिख सकते हो यहाँ पर और फिर वहाँ पर cost of goods sold लिख लेंगे. ये भी एक स्टेप हो सकता है. So now these 2,200 units which are unsold will be valued at the cost of production. Now in this value, still moving at 2 rupees per unit, we will add the selling overheads. Selling overheads. Ma'am, it should be 64,000. Okay, 4,400 है, yes. So selling, thank you beta. Selling overheads are always on the units sold. So 32,000 into 4, 1 lakh, 28,000 will be your selling overheads. Okay, sorry, it is at unit sold is at 4 rupees. Selling overheads are at 0.50. Okay, so that will be 16,000 then. 16,000 होंगे आपके selling overheads, which is at 0.50. So now your cost of sales is coming to 80,000 at 2.50 per unit. What you need to calculate here is the profit, which will be your balancing figure. So you can clearly see that the firm has kept a profit margin of 1.50 per unit, and this will be 48,000. So this is what your cost sheet will look like.
This is one here, 1,28,000. So this is how you solve this question. There's any doubt, any question, any step which is not clear, please ask. Ma'am, how did you arrive at the closing stock thing? क्लोजिंग स्टॉक बेटा यहीं पर आपको पता चल जाएगा. आपने ड्यूरिंग द ईयर 34,200 गुड्स प्रोड्यूस करे और सेल आपके सिर्फ 32,000 हुए हैं. ओपनिंग स्टॉक कोई भी नहीं दिया हुआ था, तो ये जो डिफरेंस है ये सीधा क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको 1,000 ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता, तो उस केस में 1,000 गुड्स में 34,200 ऐड होता और 32,000 माइनस होता, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 3,200 यूनिट्स आ जाता. ओपनिंग स्टॉक plus goods produced minus units sold will give you the closing stock. Okay, ma'am, got it. Okay. Any Yes, ma'am. other question? So let's then move to one more question on cost sheet. So class, here in this question, what you are given, just take a minute, first read the question, then I'll explain it to you. Okay, so in this question, you are given some data related to 2,000 units sold and manufactured by a company in 2018. What you are required to do is to calculate the cost sheet, to make the cost sheet for 2019. And there are some costs which are varying and others which remain the same. तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, उस बेसिस पर आपको चेंजेस कर कर कॉस्ट शीट बनानी है. एंड यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द प्रॉफिट फॉर 2019 एंड व्हाट विल बी द total value of sales for 2019. Okay, since units are given, again we'll be making two columns. One will be of total amount and the second will be of cost per unit. So let's start with the question. I'll help you with the initial steps जहाँ पर rise वाला cases दिए हुए हैं, and then you can solve the question, complete the question.
हाँ जी Hello, बोलो ma'am. बेटा. Ma'am, so in this question we have to work on 2400 Yes, yes, units instead of 2000. yes. 2400 units पे हम वर्क कर रहे हैं. Okay. Okay, so let's start with the question. First is the direct material or material consumed. Now you are given that the price of material will rise by 20% as compared to 2018. As compared to the previous year, the increase in price of material will be 20%. So what we need to calculate is what was the per unit material cost in 2018 और उसमें हम 20% ऐड कर देंगे. 1,60,000 divided by 2,000. It means per unit जो आपकी material cost थी that was 80 rupees in 2018. And you need to add another 20% to this, which means 96 will be your material cost per unit in 2019. Okay. अब आप टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए 96 इंटू 2400 करोगे, विच विल कम टू 2,30,400. Please pay attention. I'll explain it again. Your material cost is increasing by 20%, 20% over the previous year. So it means you need to add 20% to the per unit cost of previous year. प्रीवियस ईयर की पर यूनिट कॉस्ट 80 रुपीज आती है, उसमें 20% ऐड करा, 16 रुपीज ऐड करा, पर यूनिट कॉस्ट हो गई आपकी 96 रुपीज. मल्टीप्लाई इट विद 2400 units manufactured in this year and you get 2,30,400 as your material cost. Similarly, we calculate the wages, direct labor also. अब डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना हुआ लास्ट ईयर के हिसाब से 120 रुपीज, और इस ईयर में आपको दिया हुआ है दैट दिस वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5%, which means there will be an increase of 6 rupees in the labor cost. So I will add it here, 120 plus 5%, which makes it 126. अब लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 126 इंटू 2400 यूनिट्स. Okay, this is the first step in the solution. Any doubt in this? Please ask. मैम 120 कैसे आया था मैम? 120 बेटा आया 2,40,000 आपने वेजेस पे करी हैं, कितने यूनिट्स के लिए, 2000 यूनिट्स के लिए, तो डिवाइड करके 120 पर यूनिट आया. ओके 120, हाँ, और 120 में अब आपने 5% ऐड करना है तो 6 रुपए ऐड हो जाएगा. 126 विल बी दी टोटल पर यूनिट labor cost. Okay, after that class, if you see, you are given the third point, that manufacturing expenses, that is your factory overheads, will increase in the same proportion
as the combined cost of material and wages. Now what does this mean? पिछले ईयर में in 2018 your combined cost of material and labor was rupees 222, sorry 200, and in this year this cost is 222. तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में हो रहा है, इन दी प्राइम कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट एडेड परसेंटेज विल गिव अस द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर. So how do we calculate the percentage increase? I am showing it here. Percentage increase will be difference upon original into 100. 22 rupees का difference है, original था 200 into 100. This is how you calculate the percentage increase over the previous year. आर्या ये 3.32 तो नहीं आएगा बेटा, चेक करो आप. मैम 11%. हाँ 11% आएगा. Ma'am, actually what I done was जो उसमें total cost आ रही थी, I have not taken per unit cost, I have taken the total cost. नहीं, डोंट टेक दी टोटल कॉस्ट. आपको जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज दिया हुआ है, अगर आप टोटल कॉस्ट लोगे तो उसमें यूनिट्स भी तो इंक्रीज हुए हैं ना. मैम बट मैं 2000 से टोटल कॉस्ट 24 को भी ना, हुए हैं. मैं टोटल कॉस्ट 2000 यूनिट्स के आपसे ले रहा हूँ. आई एम प्रोपोर्शनिंग इट दैट वे. यू आर टेकिंग 96 into 2000 करके. यस मैम. इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? ओके. ये तो बहुत सिंपली है, पर यूनिट से डायरेक्टली हो जाएगा 11%. ओके मैम. ठीक है. अच्छा, अब हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्लास लास्ट ईयर देवर 1 lakh. I'll write the manufacturing expenses here. Last year they were 1 lakh rupees. You add 11% and they will become how much? 1 lakh में 11%. पर इसमें आप डायरेक्टली पर यूनिट में ऐड करोगे. तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लास्ट टाइम वाज 50 rupees. I add 11%. It becomes 55.50 per unit, and now I multiply it with 2400 units for this year. Your manufacturing expenses are 133,200. Okay, this will give you the works cost or the factory cost. रेंट और रेट्स भी ऐड होंगे क्योंकि रेंट और रेट आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. सो आई विल जस्ट ऐड दैट आल्सो हियर. So there is no change in rent and rates as mentioned. आपको पिछले ईयर का रेंट और रेट 20,000 दिया है फॉर 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. सो देयर इज नो चेंज. देन वी टेक इट टू बी द सेम क्योंकि फैक्ट्री रेंट है ये चेंज नहीं होगा विद द यूनिट्स. So this will remain at 20,000 because this is given. Other expenses will remain unaffected by the rise in output. So 20,000 divided by 2400. Now you get the per unit cost as 8.33.
Okay, now please complete the question. बाकी जो expenses हैं, selling expenses per unit will remain the same. Other expenses amount will remain the same. So complete this question. Let us see how much is the profit coming to. I'll help you with the profit statement. तब तक आप वहां पर cost of sales calculate करो. ये सारे 1,02,000 है आपका प्रॉफिट. Yes. What is the cost of sales coming to? Because after this, you are adding the office expenses and the selling expenses. Okay, one thing more class, आप रेंट और रेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में भी ले सकते हो क्योंकि फैक्ट्री रेंट एज सच आपको टर्म नहीं दी हुई. सो दिस कैन कम हेयर और इट कैन कम अंडर द ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल्सो. ओके, what you can do is that आप एक footnote बना के वहां पर ये लिख सकते हो कि we have taken rent and rates under office overheads, और अगर फैक्ट्री में लिया तो rent and rates have been considered under the factory overheads. जैसे मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है, ऐसे स्टार बना के आंसर शीट के एंड में, उस पेज के एंड में उस स्टार की एक्सप्लेनेशन लिख के आप you can write down star is equal to rent and rates have been considered under factory overheads. So that is your choice. After that you are adding the selling and general expenses और आपकी cost of sales आ जाएगी 9,18,000. Yes, correct. So I'll just move to the next page. So after adding office overheads, you get the cost of production. After adding the selling overheads, you get the cost of sales. It is coming to 9,18,000. Per unit कितनी आ रही है? एक बारी आप वो भी पुट कर दो. Plus profit.
So on the units produced 2400, the cost of sales per unit is coming to 9,18,000 divided by 2400. So it is coming to 382.5. Okay, after this class, in the question it is given that the profit will be 10% on selling price. इसका मतलब क्या है? अगर 10% है सेलिंग प्राइस पे, 1/10 है सेलिंग प्राइस पे, तो 1/8 होगी कॉस्ट पे. If profit on selling price is 1/10, which is 10%, then profit on cost will be 1/9. Read this statement. Yes, 10/100 हुआ, सेलिंग प्राइस पे 1/10 हुआ, तो 1/9 होगा आपके कॉस्ट पे. So which will be 9,18,000. Ma'am, could you repeat the last Yeah, point? I'll just repeat. I'll just write down the amount. Okay. The profit on selling price is 1/10. तो सेलिंग प्राइस पर 1 हमेशा एडेड होता है डिनोमिनेटर में, तो कॉस्ट पे वो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर सेलिंग प्राइस पे 1/10 है, 10/100, if selling price is assumed to be 100, profit on selling price is 10/100. So profit on cost price will be 10/90 or 1/9. अगर 1/5 प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पे, तो 1/4 हम लेते हैं कॉस्ट पे. कॉस्ट पे हमेशा प्रॉफिट की जो डिनोमिनेटर होता है उसको 1 से हम लेस कर देते हैं. ऐसे करके आप इसको रूल को मेमोराइज कर लो. If profit is 1/8 on selling price, on cost it will be 1/7. Okay, so your profit will be 1/9 on cost, and that is coming to 1,02,000. You added to 9,18,000. Your total sales volume value is coming to 10,20,000. Per unit cost of sales 425, and per unit profit 42.5. So now you have completed the cost sheet. This will be the amount of profit you have calculated. How you have calculated, show it in working notes.